Everyone sets goals for themselves. I'm pretty sure even you did. When young, even I had some life goals on how I wanted to see myself 5 to 6 years into the future. But ever wondered, what if you fail to achieve them? What if life doesn't go the way you want it to go? What if even by working your butt off, you don't get the desired results? Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Hamza Tahir from Random and More. इस वीडियो में क्या है? Well, I'll be giving you guys a challenge, a 30-day challenge. Say I'm starting this challenge. The date is 5th March 2019 and I'll end it 5th June 2019 को. So जिस तरह से I told you guys at the start कि आप लोगों ने भी कुछ सोचा होगा अपनी लाइफ के बारे में. So just like you guys, even I planned something for myself. And quite frankly, I haven't reached like even halfway there. Like I used to be a really good student in my O levels, in my A levels too for some time. And uske baad I don't know what happened, but I know what happened. I got this smartphone addiction. By the way, if you guys haven't watched our video on smartphone addiction, you should go back and watch it. It is a Drive With Us video and it is of me and Usama Bhai and Rafi. So I recommend you guys to watch it. There. अब हुआ क्या कि जिस तरह का मैं स्टूडेंट होता था, अब मैं बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा. I have started wasting a lot of time. I end up wasting a lot of time. I procrastinate a lot. The thing is, I'm in my 20s. मेरे पास ज़्यादा time नहीं है waste करने को. This is the make or break time for me. That's why I've decided that I think this is the time. And the reason I'm doing this challenge is like I want you guys to hold me accountable. क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैं lazy और दोस्ती इंसान हूँ, मैं अपने बलबूते पे सिर्फ इतना कुछ नहीं कर सकता. I need to record this. So करूँगा क्या मैं? Well, अगले 30 दिन रमज़ान है and रमज़ान for us is like हमारा पूरा schedule change हो जाता है. So I want to push the reset button in my life. Reset button जहाँ मैं अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको एक तरह से full stop लगा सकूँ, उनको अच्छी आदतों से replace कर सकूँ. और मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि I'll try my best. क्योंकि देखिए, या तो मैं इस एज में रो लूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, या फिर I can just work hard on becoming something that I really want to become. I'm gonna do this. I'll try. I'll work hard. मुझे अगले 30 दिन मैं अपने पढ़ाई में improve करूँगा, लेकिन खैर इसका कोई एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है. तो मैं बस इस तरह से आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले दिनों मैंने इस चैलेंज से पहले कितनी पढ़ाई कर सका था और इस चैलेंज के दौरान मैंने कितनी प्रोग्रेस की इन माय स्टडीज. सेकेंडली बुक्स का, उसमें आई ट्राई टू रीड थोड़ा सा ईच डे, थोड़ा ईच डे. थर्ड थिंग अबाउट हेल्दी एक्टिविटीज. आई ट्राई कि मैं वर्कआउट करूँ या फिर मैं कार्डियो वगैरह करूँ. एटलीस्ट रमज़ान में मैं ये कर सकता हूँ. So let the challenge begin. Okay, so this is how I'll be keeping a track of my progress throughout this month. So सबसे पहले मैंने labels बना लिए. Labels क्या है कि green tick means half an hour of exercise done. Red tick means half an hour of reading done. Blue tick means studying done. Studying के लिए मैंने कुछ time नहीं रखा है. Cross it means कि मैंने 3 से ज़्यादा घंटे लगाए social media पे उस दिन. Like you can see, and I'm being honest in this. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, not Tuesday, Sunday, yeah, let me show you. Sunday, Monday and Wednesday. इस दिन मेरा social media usage was more than 3 hours. तो इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया इसे खुद से. I'm being honest. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चैलेंज हार गया हूँ, क्योंकि even if it's more than 3 hours, I've tried to keep it at least less than 4 hours maybe of social media. और अगर मैं पहले जैसे 5 या 6 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता था और अब अगर सिर्फ 4 घंटे या 4 घंटे से कम हो रहा है, तो आई कैन बी हैप्पी. और अगर उसके साथ साथ मैंने कुछ किया है, लाइक वेडनेसडे को मैंने पढ़ाई भी किया, आई हैव डन रीडिंग, आई हैव डन एक्सरसाइज उसके साथ, लेकिन 4 घंटे या 3 घंटे से थोड़ा ज़्यादा मेरा सोशल मीडिया यूजेज हो गया. सो या
I'll try to keep it down again, like less than 3 hours is the goal, and hopefully by the end of the month I can reach that. But abhi ke liye, if I just like end this challenge, so I'll just demotivate myself और ये challenge complete नहीं हो सकेगा. So yeah, that's it. So hello guys, and this is a quick 2-week update on how my challenge is going. Well, I won't say I'm too explaining it. No, I'm not. It's difficult for me. First of all, avoiding procrastination for such a long time is not easy. It's been 2 weeks. I'm trying not to procrastinate. थोड़ा time लग जाता फिर भी रोज फोन पे, लेकिन इतना नहीं लगता जितना पहले लगता था. So why isn't it easy? Because I'm a proper procrastinator, and for proper like procrastinators like me, we feel this urge to get an immediate reward, or we tend to sacrifice our long-term goals for that immediate reward. And those rewards include like YouTube. Yeah, so it's this urge to avoid karna is not easy at all. 2 weeks हुए और मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन I'm trying के because I've taken up the challenge, so at least just complete it. And I hope that at the end of the month, this habit doesn't go away. It sticks with me. I develop this self-discipline for myself. Secondly, each of those 3 things I mentioned about how they are going. So first of all, पढ़ाई. Well, Ramzan में पढ़ाई करना is not easy. क्योंकि इफ्तार से पहले you feel like बहुत drowsy and drained out, और इफ्तार के बाद बहुत कम time होता है, like people have to go like तरावी होता है और उसके बाद फिर नींद भी आ जाती है, which is a case with me कि तरावी के बाद I just feel really sleepy. So I try कि जब मैं उठ सकता हूँ मैं रात को जाके पढ़ लेता हूँ till सहरी. I'm trying like अगर दिन में 3 से 4 घंटे भी पढ़ाई हो जाती है तो I'm happy with myself. उसके अलावा ये कि about exercise, मैंने अपने लिए टाइम निकाला था आफ्टर इफ्तार का, लेकिन even that wasn't working out because sometimes I tend to have a heavy iftar. But now what I'm doing is इफ्तार से पहले मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ. Why? Because एक तो इफ्तार से पहले अगर मैं थोड़ा सा थक भी जाऊँ या even if I get thirsty, then अगले 10-15 मिनट में इफ्तार हो जाता है, so that's not an issue. और secondly ये कि इफ्तार से पहले ये होता है कि our body is in a starving state, और उस वक्त ये होता है कि हमारे ग्लूकोज स्टोर जो होते हैं they are almost depleted. And if you work out उस time पे, then you're actually burning your fat, so that's a good thing. उसके अलावा how my reading habit is going, well, this is one habit I've fallen in love with. Like, मैं रोज पढ़ रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया, इसलिए क्योंकि I've started liking this reading habit. I'm currently reading this book. Let me show you guys. It's When by Daniel H. Pink, and it's a really good book. It's helping me organize my schedule, so I hope to finish it by the end of the month. So let's see how I do. Bye bye. Okay, so I am back, and first let me tell you guys, it's not 5th of June as promised earlier. It's 10th of June because 5th June to Eid thi and I was busy. So let's get on to how my month has been. So I have this calendar with me abhi to tell you guys how it has been. So let's start with it. First of all, you can see many red crosses start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Whole 30-day challenge. There were 7 days where I spent more than 3 hours on phone, but as told earlier, I wouldn't call that a failure because एक तो जो फ़ोन पे टाइम था मेरा नॉर्मली 5 से 6 घंटे एक्सीड कर जाता है, और अगर मेरा इसमें जैसे कि मैंने बताया था अगर मेरा 3 या मैक्स टू मैक्स 4 घंटे लग रहा है फ़ोन पे, अगर इन दिनों में भी 3.5 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा फ़ोन पे. So I don't think so that we should call that a failure.
उसके अलावा you can see जो stars हैं, days on which I perfectly followed the schedule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 out of 24 days जिसमें मैंने अपना schedule perfectly follow किया. और फिर कुछ दिन ऐसे भी थे जिस दिन यानी 2 टास्क कंप्लीट हुए, तीसरा नहीं हुआ because of some reason or other. और इसलिए for example जून भी, so 1st June, so 10 days that schedule perfectly followed, and then there were these 3 days जहाँ मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे. By the way, we just uploaded a vlog on our exams जो कि हमारे हुए थे 1st June को और 29 May को, so do go watch that. उसके अलावा एग्जाम्स खत्म हो गए तो उसके बाद you guys know it, उसके बाद कौन पढ़ता है, our vacation started, so we gave ourselves a break, और इस break में फिर मैंने भी नहीं पढ़ा तो anyways, so how happy I am with this challenge. But I'm actually pretty happy because when I started this challenge, अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहा होता था. जैसे कि I told you guys earlier, 5 to 6 hours on phone. I had no idea where my time was going. Now I'm much more aware कि मैं हर वक्त क्या कर रहा हूँ, मेरा हर मिनट किस काम में गुजर रहा है. Yeah, I do spend some time on YouTube और Facebook कभी भी, लेकिन I'm more aware कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितना टाइम मुझे देना और कब मुझे बस बंद करना है. और इस चीज़ में मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर हूँ कि बस अब बंद करना है और अब उठ के पढ़ना है या किसी काम में या कोई प्रोडक्टिव काम करना है. सो दैट्स वन पॉजिटिव फ्रॉम दिस मंथ. सेकेंडली, मैंने ये बुक आई टोल्ड यू गाइस अबाउट व्हेन बाय डैनियल एच पिंक, वो मैंने पूरी फिनिश कर ली. इट वाज अ ग्रेट बुक. और इफ़ यू गाइस आर हैविंग स्ट्रगल्स फाइंडिंग योर ओन वर्किंग स्केड्यूल, so I recommend you guys to give that book a read. के अलावा exercise, well उससे I expected कि मेरे अंदर ज़्यादा visible change आएगा. और you guys are looking at me right now, you guys saw me मैं किस तरह था. 1 महीने में ज़्यादा चेंज नहीं आया, बस थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई होगी, थोड़ा हेडेड वगैरह सेट हो गया होगा. उसके अलावा इतना चेंज नहीं आया. Maybe because visible change आने में, physically change होने में थोड़ा टाइम लगता है. और secondly because सही मैंने एक्सरसाइज तो की है, बट रमज़ान में फ्राइड आइटम्स खाना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड मे बी इसलिए नहीं हुआ. सो these are the excuses I have. But the main thing, self discipline. I feel कि थोड़ा सा मेरे अंदर self discipline आया. Why? Because as I told you, जब मेरे अंदर एक चीज़ आ गई कि मुझे पता होता है कि मुझे पता चलने लगा कि कब मुझे टाइम वेस्ट करना ख़त्म करना और कब मुझे अपना प्रोडक्टिव टाइम लगाने लगे, कब मुझे अपना ब्रेक ख़त्म करना है और कब मुझे अपना प्रोडक्टिव टाइम लगाना है. सो दैट्स समथिंग दैट वाज नेवर देयर इनसाइड मी, एंड नाउ आई फील कि हाँ मुझ में थोड़ी थोड़ी आई है और अब मैं इसको ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा. एंड आई जस्ट ट्राई टू मेंटेन इट बिकॉज इफ आई डेवलप इट विल बी अ रियली गुड हैबिट, कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर मी. So I think that's the end of today's video. I hope you liked it. Thanks for staying here till the end of this whole thing. Or I hope that you liked it, and I hope you guys implement something positive in your life as well. Like maybe try doing this challenge. Ramzan ke baad karna will maybe be even easier for you guys. So do definitely give it a try. And Baki, if you have any questions, you can reach out to us. Or just like this video, share it with your friends, subscribe to our channel. उसके अलावा you can reach out to us on Instagram account, links are in the description below. And that's it for today. Allah Hafiz.